Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes and this is Anita Misra. Today I have taken class 12 miscellaneous exercise on chapter 7 integrals. और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19. तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन नंबर 19 इज इंटीग्रल ऑफ sin inverse root x minus cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x where x belongs to 0 to 1. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बहुत ही आसानी से इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. हियर इट इज गिवन sin inverse root x plus cos inverse root x, and we know that from inverse trigonometric function sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. So in place of this we can write pi by 2. First write this one as it is, sin inverse root x minus cos inverse root x. In place of this we can write pi by 2 and write dx. Here यहाँ पे हमने यूज किया है फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. नाउ वी कैन राइट पाई बाई 2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो वी कैन राइट 2 बाई पाई outside from integral. Then write sin inverse root x minus cos inverse root x dx. Then write this one as it is, 2 by pi integral. अभी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 का फिर से यूज करेंगे. सो यहाँ पे हम साइन इनवर्स रूट x की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट x. यहां से साइन इनवर्स x क्या होगा, यहां से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x. सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह यहां रूट x है, माइनस write this one as it is, cos inverse root x dx. Then we can write 2 by pi integral pi by 2 minus cos inverse root x minus cos inverse root x. So it will be 2 cos inverse root x dx. Then write them separately. So first we can write 2 by pi. Pi by 2 is a constant, so take it out and write here pi by 2 integral of 1 dx, or this one. Then write minus 2 is here, 2 is a constant, so take it out, and 2 is already here given, so 2 into 2 will be 4. So we can write 4 by pi integral cos inverse root x dx. 2 and 2 will cancel, pi and pi will be cancelled, and integral of 1 dx is x. So write here x. Then write minus 4 by pi integral cos inverse root x dx. Equation number 1. Now we have to integrate
cos इनवर्स रूट एक्स। और हमें जब भी cos इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स यानी इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना रहता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन जी एक्स dx is equal to first function fx into integral of second function gx dx, right, minus integral of derivative of first function, that is f dash x into integral of second function gx dx, then integral। यहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बट यहां पे तो हमें केवल वन फंक्शन दिया हुआ है, तो दूसरा फंक्शन हम क्या लेंगे, वन ले लेंगे। सो राइट हियर वन। अभी यहां पे हमें सोचना है कि हम कौन सा फर्स्ट फंक्शन लें। अगर हम वन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो जब हम वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, यानी ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा और यहाँ पे फिर से यही टर्म आ जाएगा। इसलिए हम वन को फर्स्ट फंक्शन नहीं लेंगे। कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है। जब हम कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए हम कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और वन को सेकेंड फंक्शन लेंगे। नाउ सो वी कैन राइट दिस एक्स एज इट इज -4/π, right, fx. fx means first function. Here first function is cos inverse root x into gx. Second function. Second function is 1. So write 1 dx minus and integral of derivative of first function. First function is here cos inverse root x. So write here d by dx of cos inverse root x into integral of second function. Second function is 1. So write here integral of 1 dx. Then write here dx. Now we can write here x minus 4/π into first function cos inverse root x into integral of 1 dx will be x. So write here x minus integral of, first we have to find out derivative of cos inverse root x. So it will be minus 1/√1 minus x square. So square of root x will be x. So write 1 minus x. And derivative of this root x will be 1/2 root x. Because root x means power 1/2 and derivative of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. So 1/2 minus 1 will be minus 1/2. So it will be 1/2 root x. Now write here integral of 1 dx. Yes, it is x. So write here x dx. So we can write x minus 4/π into, right, x cos inverse x minus integral of, minus and minus become plus, right here plus, and 1/2 is a constant, so write here 1/2 outside, and divide this x by root x, so it will be root x. So we can write root x divided by √1 minus x dx. Now we can write x minus 4/π
pi into x, and in place of cos inverse root x we can write pi by 2 minus sin inverse root x. So write here pi by 2 minus sin inverse root x. Then multiply this 4 by pi here, we get minus 4 by pi into 1 by 2, right here 1 by 2, integral of, here it is given root x divided by root 1 minus x. So we can write integral of root x divided by 1 minus x dx. Now we can write x minus, multiply this 4 by pi x in this bracket, we get 2 2 ja 4. So write here 2 and x, pi and pi will be cancelled. Then minus and minus become plus. We can write 4 by pi x into sin inverse root x. Right here 2x. Then write this one. Divide this 4 by 2. We get 2 by pi integral of root x divided by 1 minus x dx. Now we have to integrate square root x divided by 1 minus x. तो यहाँ पे हम फिर से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे. सो वी हैव टू पुट x is equal to sin square theta. Then differentiate both sides with respect to theta. We get dx is equal to 2 sin theta into, again differentiate sin theta, we get cos theta d theta. Now we can write x minus 2x, it will be minus x. So write here minus x plus 4x by pi into sin inverse root x minus, write this 2 by pi integral, in square root, in place of x we have to write sin square theta. So write here sin square theta divided by 1 minus x, yani 1 minus sin square theta, and in place of dx we have to write 2 sin theta into cos theta d theta. So we can write minus x plus 4x by pi sin inverse root x minus, write this 2 by pi as it is, integral of square root of sin square theta, it will be sin theta, and 1 minus sin square theta is cos square theta, and square root of cos square theta will be cos theta. So we can write here cos theta, and here it is 2 sin theta into cos theta d theta. Cos theta and cos theta will cancel. So we can write minus x plus 4x by pi sin inverse root x minus 2 into 2, it will be 4 by pi into sin square theta. Sin theta into sin theta, sin square theta. So write here sin square theta d theta. Now we have to find out integral of sin square theta again. और sin square theta का इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? sin square theta को हम cos 2 theta में चेंज करके. ठीक है, cos 2 theta इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे cos
2 theta is equal to 1 minus 2 sine square theta. Then we can write what will be sine square theta? Then sine square theta होगा, sine square theta will be 1 minus cos 2 theta divided by 2. So sine square theta की जगह हम लिखेंगे 1 minus cos 2 theta divided by 2. So we can write this integral, write minus x as it is plus 4x divided by pi sine inverse root x minus 4 by pi integral. In place of sine square theta we have to write 1 minus cos 2 theta divided by 2 d theta. Then write minus x as it is, write this one 4x by pi sine inverse root x. Now divide this 4 by 2. We get 2 by pi integral of 1 minus cos 2 theta d theta. Now write this one as it is minus x plus 4x by pi sine inverse root x minus 2 by pi. Now we have to integrate 1 minus cos 2 theta and integral of 1 d theta will be theta. So first write here theta minus, and integral of cos theta is sin theta, but here it is given cos 2 theta, so it will be sin 2 theta divided by 2 plus write a constant c. Now we can write minus x plus 4x by pi sine inverse root x minus 2 by pi. Now we have to put the value of theta. Here x is equal to sine square theta. So what will be sine theta? We can write sine theta is equal to root x. Because sine square theta is x, so sine theta will be root x. Then what will be theta? Yes, theta will be sine inverse root x. So in place of this theta, we can write sine inverse root x minus. Here it is given sine 2 theta. So first we have to write sine 2 theta is equal to 2 sine theta into cos theta divided by 2 plus write this constant c. Cancel this 2 and 2. Now in place of sine theta we can write root x, but in place of cos theta we have to find out. So here it is given sine theta is equal to root x. So we can write cos theta is equal to 1 minus sine square theta. So it will be 1 minus sine square theta will be x. So in place of cos theta we can write root 1 minus x. So it will be, write this one 2 by pi sine inverse root x minus, in place of sine theta write root x, and in place of cos theta it will be root 1 minus x plus write this constant c. So finally we can write this one minus x plus 4x by pi sine inverse root x minus 2 by pi sine inverse root x, minus and minus become plus 2 by pi, multiply this root x into root 1 minus x, we get x minus x square plus write this constant c. Now we can write first this one, take common 2 by pi.
So we can write 2 by pi. Then here it will be 2x. 2 into 2, 4x. Minus, write this one, 1 into sin inverse root x. Sin inverse root x को भी कॉमन लेंगे. Then write sin inverse root x. Plus, write this one, 2 by pi root x minus x square. Then write this minus x plus write this constant c. So finally we get our answer, this one, 2 by pi into 2x minus 1 sin inverse root x plus 2 by pi root x minus x square minus x plus c. This is your answer. इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज किया और सबसे लास्ट में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. So see you in next video with a new question. Till then, bye bye and thank you so much for watching.